दिल्ली में एक जलसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और राहुल गांधी पर ऐसा कुछ बोल दिया कि खूब सुर्खियां बनी। संसद तक में बवाल हो गया। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सरकार के दबाव वाले सवाल पर बोला, क्योंकि दिन में कानून मंत्री जजों की लक्ष्मण रेखा बता गए थे। सचिन तेंदुलकर ने BCCI प्रेसिडेंट बनने पर जवाब दिया तो मलाइका अरोड़ा ने कहा, लोग मुझे सेक्स बॉम्ब बोले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये सब हुआ था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, जो 17 से 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित हुई। जैसे हमने शुरू में बताया, वैसे ही और तमाम सुर्खियां बनी। आपको एक एक करके बताते हैं। शुरुआत करते हैं PM नरेंद्र मोदी के बयान से। PM मोदी ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर बिना उनका नाम लिए कहा कि आज देश में इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा उठा लिया है ताकि नजर न लग जाए। सुनिए। जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। अब हम जानते हैं कि किसे कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने न्यायपालिका से लेकर कॉलेजियम सिस्टम पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अदालतों की जवाबदेही एक मुद्दा है और लक्ष्मण रेखा दूसरा मुद्दा है। सुनिए। Accountability is one issue. The Lakshman Rekha is another issue. Accountability of judges is something which I am getting lots of feedback, suggestions these days, because judges are not accountable, you know it. Many people have suggested also that along with the National Judicial Appointment Commission, it should be a National Judicial Commission to regulate the conduct and the process of how courts are maintained, ruled, or how judges are conducted. So there are various suggestions. I am not going to talk about any particular suggestion or any particular thing, but in general it's coming to me. We all are accountable. Parliament runs under rules. There are rules of business. Assemblies, government functions under rules of business. But in the court, there are no rules. There are practices which are being changed from time to time, and the Chief Justice, as the master of the roster, conducts certain thing. As far as the holidays are concerned, judges are going for holidays and all. So these are not exactly decided on the basis of rules framed by the Parliament, but these are on the basis of the convention and the practice adopted by the Supreme Court and different high courts. That is why the holidays of different high courts are different from each other. It's not uniform. कानून मंत्री के कई सवालों के जवाब देके देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ने सरकार के दबाव वाले सवाल के जवाब में कहा कि बतौर जज मेरे 23 साल के कार्यकाल में किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि केस का फैसला कैसे करना है। Well, let me not join issue with the law minister. He has a perception, I have a perception, and there's bound to be a difference in perceptions. And what's wrong about having a difference in perceptions? Sometimes there's a difference, but we have to deal with differences in perception even within the judiciary. I dare say there are differences in perception even within government, but we all deal with it with a sense of robust constitutional statesmanship. So first and foremost, I don't want to join issue with the law minister for his perception. I respect his perception, and I'm sure that he has a great deal of respect for ours as well. In my 23 years as a judge of the High Court,
as the Chief Justice of the High Court and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. CJI चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि आखिर जजेस इतनी छुट्टियां क्यों लेते हैं और इन छुट्टियों में जजेस करते क्या हैं। People see us sitting in court from 10:30 to 4. We handle between 40 and 60 cases every day in the Supreme Court. The work which we do between 10:30 and 4 every day in the Supreme Court is a fraction of the work which we do. In order to be ready to deal with the other cases which are going to come up the next day, you spend an equal amount of time in the evenings reading for the next day. Our judgments are in reserve. So on Saturdays, typically every judge of the Supreme Court will sit down and dictate judgments. On Sunday, all of us sit down and read for Monday. So without exception, and I'm not speaking for myself, without exception, every judge of the Supreme Court works for 7 days in a week. कॉन्क्लेव में शामिल हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने उनसे जब पूछा गया कि अक्सर ये बात सामने आती है कि चाहे वो राफेल का मामला हो या फिर अयोध्या राम जन्मभूमि का, ऐसे मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर राजनीति का प्रभाव पड़ता है? I would like to say that the word label political can be attached to anything. I see nothing political about the Ayodhya case. The case, what we heard. There is probably nothing political about Rafale. It was a defense deal. Ayodhya was an issue about whether Lord Ram, amongst other things, Lord Ram was born in that place, etc., etc., etc. So I don't see, and the case has been going on since, the problem has been going on since pre-independence times. What is political about it except that politicians talk about it? Or some might want to derive political mileage from a controversy. We are not involved in politics as courts. We decide a case that comes up before us, brought to us by parties who have something to say and who have a claim, and we adjudicate that claim. What is politics in it? कॉन्क्लेव में अपने सेशन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैम्ब्रिज में राहुल गांधी की चीन वाली टिप्पणी पर तीखा हमला किया। As a citizen of India, I am troubled as a citizen of India when I see somebody drooling over China and being dismissive about India. And I'll give you examples. He puts his description suo motu of China in that Cambridge talk. You know what's the word which comes to his mind when he talks of China? Harmony. His one-word description of China is harmony. His one-word description of India is discord. Okay. He talks admiringly of how China is the greatest manufacturer, nobody can. And yes, China has done a tremendous job. I mean, nobody. But when it comes to manufacturing in India, he runs it down in every possible way. He says, make in India won't work. I mean, when you made Covaxin, the Congress party was saying Covaxin doesn't work. So, you know, it's one, look, you can have objective assessments about the progress of other countries. There's nothing wrong with that. But in this current situation, to talk up, you know, a competitive relationship and to worse, do down your own country. कॉन्क्लेव में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। बोले निचले तबके के 70 करोड़ लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुनिए। Top 500 companies, foreign direct investment. It makes sense only to the first 70 crore of India. It makes no sense at all to the bottom 70 crore of India. And even if 70 crore of India buy and sell and go round, India's economy will look shining. But what about the bottom 70 crore? Therefore, Mr. Modi neglected the bottom 70 crore, and I squarely charge this government of having neglected the poor and the very poor. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी आए थे और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बीसीसीआई अध्यक्ष बनेंगे तो देखिए मजेदार जवाब मिला।
मैंने इतनी ज़्यादा फास्ट बॉलिंग नहीं की बिकॉज सौरव स्टिल कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ फास्ट बॉलर। मुझे याद है जब सौरव ने टोरंटो में विकेट निकाले थे तो सौरव मुझे ऑलमोस्ट कहने लगे यार मैं थोड़ा और दम लगाऊंगा तो 140 तक जा सकता हूँ। मुझे लगा दादा तो जा सकता है। उसने 2 दिन प्रैक्टिस की और पीठ पकड़ी उसकी एंड देन आफ्टर दैट ही इज नेवर स्पोकन अबाउट 140। मैं 140 नहीं डाल सकता हूँ। इस दौरान सचिन ने बल्ला भी उठा लिया। साथ ही 2003 क्रिकेट विश्व कप में शोएब अख्तर की गेंद पर जो अपर कट लगाकर शॉट छक्का मारा था उसे भी करके दिखा दिया। Just pose for us in that shot. Firstly, was that an uppercut? What was it? Shoaib Akhtar was bowling. High pressure game. 1st March, I think, 2003. हाँ, या आई नो। और उसके पहले बहुत स्लीपलेस नाइट्स हो चुके थे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम इज ऑलवेज अ बिग गेम। लोगों ने ऑलमोस्ट व्हेन दे गॉट टू नो क्लोज टू मे बी 10 months और 1 साल पहले ही बात करनी शुरू की थी बाकी के गेम्स का जो भी हो जाए ठीक है, ये गेम जीतना है। तो आई सेड व्हाट डू यू मीन? नहीं ये गेम जीत के आओ। तो उस तरह का प्रेशर था, एक्सपेक्टेशंस थे। वो ज़्यादा तेज नहीं, ऐसे ही 150 पे डाल रहा था। अगर गलत टाइम पे आप ब्लिंक कर जाओ तो बॉल निकल जाता था। मगर दीज काइंड ऑफ शॉट्स आर नॉट प्लान्ड। अगर आपको दिख जाता है बॉल एंड इफ यू हैव टाइम टू प्ले देन यू गो फॉर इट एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कि मैंने देखा कि बॉल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है। I'm going to get away because the camera people don't want me. एंड शॉट है तो बेसिकली आई एम गोना जस्ट शो यू व्हाई इट्स हार्ड टू रेप्लिकेट बट saw the ball hit the length first I thought shall I let it go and I thought maybe bahar hai I can do it so I do that was right. कॉन्क्लेव में हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल के प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर भी पहुंचे। उन्होंने बुढ़ापे को मात देने और हमेशा जवान बने रहने के फॉर्मूले के बारे में भी बताया। ये तो आपको जरूर सुन लेना चाहिए। So what we've discovered in my lab, in studies in yeast cells that make bread and beer, in worms and flies and mice and monkeys and now humans, is that we want to put our bodies into a state of adversity, make the body feel a little bit uncomfortable. So how do we do that? Well, we can skip meals, we can exercise, we can eat food that is plucked from the ground when it's also stressed because they have wonderful chemicals in them that make us healthier. And we can also get enough rest and calm down the sleep that leads to inflammation and other things like that. So really you want to make your body fearful of running out of food or fearful that you're having to run away from a tiger. And that turns on the body's defenses against aging, we've learned. बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर मलाइका अरोड़ा ने कॉन्क्लेव में कहा कि अगर उन्हें कोई सेक्स सिंबल बोलता है तो उन्हें ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। Firstly, I love being called a sex symbol. I have no qualms about being a sex symbol. I'd rather be known as a sex symbol than being called plain Jane. Absolutely. I'm very happy. I like that tag. In terms of insecurities, I think I live with insecurities every day of my life, something or the other, because at some point I know that there is somebody younger, prettier, more talented, probably a lot more going for her every single day of my life. And for me to stay focused or stay in a space where I behave like where it doesn't get to me is a very difficult thing, but I have to stay and keep my head above the water because I know every single day that is probably shoved into my face. And single mother, divorce, I'm not going to harp on it, but it's always thrown at my face every single day. So for me to stay above the game is very tough. So I think these are probably these are my insecurities that I have to deal with on a daily basis. तो ये थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की वो सेशंस जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। सेशन और भी थे, आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो लल्लन टॉप पर जाकर देख सकते हैं। आपको कौन सा सेशन ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।